So let's start with the session. So how is everyone? Uday, and I request everybody to please turn on your cameras so that we can have a good session. And in the very starting, I want to mention one thing that today, next 2 hours or 2.5 hours, these are going to be a training session, not a satsang. So have this thing in your mind that we are not going to be just a listener rather than be a participant. Okay, because we'll be doing a lot of activities. I'll be giving you a lot of activities we'll do. Because see, guys, when we talk about branding and marketing, so it's not like understanding a lecture on any topic like psychology or something. It is actually doing. Till the time you're not doing marketing, you can never understand marketing. So marketing is all about the more you do, the more you learn. And today, as the people who have attended my session, is there anyone who have attended my session earlier out of this? Yes, Sami. Okay, Ritika has attended. Anybody else? For me also, Manjula, I had attended your Sir, session earlier. Great. So I want everybody, those who have attended my session, just write down the names in the chat box so that I can know how many old participants I have. One is Ritika. She told Manjula told she has attended. Do I have more people who have attended this session earlier? Okay, Zia, Priyanka, Robert. Okay, so great. So if you guys have attended my session, you might be knowing how my session will be done. You might be aware about the conduct and the process. You might be aware about everything. So guys, turn on your cameras, and now we'll jump on the session, how marketing works. Okay. So today, as we keep doing a lot of tools, techniques, a lot of different methods, today I just thought of giving you an overview about marketing, like what all patterns we should follow about marketing. And at the end of this session, I have kept one very uh, big hack, we can say, that how to extract emails. That is the question that we keep receiving from our learners, that sir, data kahan se aayega, how to do marketing. If you want to do marketing, like in my previous session, I told you that uh, if you don't have data, you can never get customers or clients. So today, by the end of the session, we will talk about how to get emails without actually reaching people. What is the shortcut for that? I'll give you one hack at the end of the session about extracting emails from Google. Okay, directly from Google. So let's come on to the session. Thank you everyone for joining me. Give your introduction in the chat box. For next 60 seconds, we are just holding on here and we will just wait for introduction. And for my introduction, guys, I am Shivam Dikshit. I am currently the CMO and CFO in Counsel India. I am handling the entire marketing and branding of the company. Apart from this, I'm also managing the finance structure of the company. Okay. So I want to receive your introduction in the chat box. You can just put your introduction in the chat box, like what's your name and what do you do? That's it. So I have Ritika, yoga instructor and clinic nutritionist. What about others, guys? As I told in the starting, we are having a session today, and that is a training session, and we are not in a satsang. So please don't sit and just listen to it. Rather participate with me, just be with me, and I can guarantee you by the end of the session you will enjoy. Okay. So what we have done today, like this is the code that I always use in my webinars in the starting. The most disappointed participants are the ones who never participated. So I hope in today's session, nobody want to be disappointed. And if you don't want to be disappointed, just participate. Okay. The more you participate, the more satisfied you will be. Okay. Next is, if you need recording for this session, attend the session for minimum 1 hour 40 minutes. So in Zoom, we have a feature, and as we get a lot of messages by the end of the session that we left in between, we got this work, we got that work, please give me recording. So today, if you want recording, guys, you have to be with me for at least 1 hour 40 minutes. Otherwise, because in Zoom there is a feature that we can calculate how much like time you were there on the Zoom. So we'll find out that time,
and on the basis of that only we'll send you the recordings. Okay, so try to match with the time and try to stay at the end, because end I'm again repeating, and we have a tool that is today we're going to discuss that how to extract emails. अगर आपको emails मिल जाती है तो मुझे लगता है आपकी marketing बहुत हद तक improve हो जाएगी, right? And you'll be able to get clients. So coming on the next part, why to do marketing? This is the biggest question that people have, right? So shall we start? Yes or no? Write in the chat box. Shall we start? Yes or no? Write in the chat box. Okay, Rutvik is writing yes. What about others? Priyansha, Tanya, Rumi. Okay, great. I can see a lot of people writing yes in the chat box. Tanya, Tarot Reader, Rumi, Mala, Manjit Kaur. Great, cool. So guys, now the question is why to do marketing? Anybody in the room can tell me what is the need of marketing? Why do we do marketing? The biggest question. What is the need of doing marketing? Anyone? The impact on people. Sorry, Mudit. It's to leave impact on people. It's to leave impact on people. Exactly. Anyone else? To live the livelihood, sales is the most important part for any of the organization functioning, and marketing is the big area which involves sales. So marketing is needed to have audience who can be a part of your trading or services. Okay. Nice. Nicely explained. Anyone else? Also, To make sir, it a brand. To make it a brand. Okay. Right. Okay. to spread the work, to spread the awareness and the work we are doing to the people, so that it could reach to more and more people. In this room, do we have anyone from exactly marketing background? Do we have anyone from marketing background? Any MBA or Yeah. or any other marketing college or something? Or anybody is having any marketing background or doing marketing in any company or something? No, sir. No. Anyone? Udit? No? Okay. So guys, Just doing a business. Doing a Okay, business you're as running business. an artist. Yes, sir. okay, so Mudit, you might be knowing the difference between marketing and branding, because somebody Okay. told in between ki it is to increase the brand of the company. Somebody told, you also told about to make it very like, what did you tell? To leave an impact on people. Yeah, to leave an impact, exactly. So if I discuss or if I ask you, what is the difference between branding and marketing? Now, let's make it a bit challenging. मार्केटिंग में भी क्या हो रहा है, ब्रांडिंग में क्या हो रहा है? अगर हम इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो वो मार्केटिंग होगा कि ब्रांडिंग होगा? अगर हम अपने ब्रांड को वायरल कर रहे हैं तो वो ब्रांडिंग होगी कि मार्केटिंग होगा? I think it's a branding. It's exactly, it's a branding. So we have to understand this, what is the thin line between branding and marketing, because many a time what we do, we keep throwing money in the market on the name of marketing, but actually it's not marketing, it's branding, and we end up with zero leads. Right. So what we have to do, I'll give you more examples about this. For example, any company creating any kind of graphics, any music, any tone, any audio, video, advertisements, anything, and if that is going into your subconscious mind, that is called as branding. It's not marketing. Okay. Or any company which is able to convert you or carry you till the salesperson, or able to get your lead or able to get your data, is called as marketing. Just giving you an impact is not marketing. For example, if you see a metro, agar aap metro dekho, metro ke rail dekho, so you will see that entire metro is covered with different posters. If you enter inside the metro, you'll find hoardings, you'll find banners. So that, what is that? That is that will come under marketing, or that will come under branding? That is branding. That is branding. Okay, because somehow they are actually hammering your brain, hammering your intelligence with that particular product or that particular service, but actually you are not giving them your data or anything. But when you go to a shopping mall or something, then that thing will come to your mind and you'll be like, yes, मैंने वो वहाँ देखा था, yes, this is a nice brand. So that is called as marketing. आप वहाँ पे पहुँच गए.
आपने वहां पे जाके अपना एक्चुअली में अपना डेटा दिया, बट क्यों दिया? बिकॉज ब्रांडिंग ने सपोर्ट किया आपको. There are a lot of tunes that we keep in mind. For example, call it as a jingle. If you, for example, you might have ordered on Zomato, right? Zomato पे food delivery तो I think सबने करी होगी. So when we order Zomato, so the moment that Zomato orders arrives, there is a small zoop sound on your phone. Have you heard about it? There's a deep branding impact behind that, right? आपको वो जिंदगी में कहीं भी साउंड सुनाई देगी कभी भी, तो you'll be like, oh yes, it's a Zomato. So it's in the branding, sir. Yeah, it's completely branding. If I tell you a tune called as there was a jingle, I'll just come with a jingle for you. I hope you'll be able to connect. Pa para pa para pa. Which brand's jingle is this? Nescafe. Nescafe. So this is called as brand. But today we'll be understanding what is branding and what is marketing. इन दोनों में difference क्या है? आज का हमारा focus रहेगा कि we will be focusing only on marketing, not on brand. ओके मेन काम ये रहेगा कि हम अपना पोर्टफोलियो, अपना प्रोफाइल कैसे बिल्ड करें कि हम लोगों का डेटा ले पाएं. एंड दैट इज द रीजन दैट आई टोल्ड यू बाय एंड ऑफ द सेशन आई हैव केप्ट हाउ टू एक्सट्रैक्ट ईमेल्स डायरेक्टली फ्रॉम द गूगल. हालांकि टूल्स तो बहुत है. देयर इज गूगल ईमेल एक्सट्रैक्टर, देयर इज लिंक्डइन सेल्स एक्सट्रैक्टर, देयर आर लॉट ऑफ टूल्स दैट वी कैन यूज. ओके, but today we'll be doing it with the help of Google directly from the home page. There is a system, there is a technique that we can extract it. Okay, so before that I want you to understand ki marketing hota kya hai. If you don't know what is marketing, if you don't know aims of marketing, you cannot get ads. I think there is some voice. If you can guys please mute yourselves. Okay, thank you so much. Okay, so why to do marketing? First is to leave an impact on people. ये हम बात कर रहे थे जैसे कि to leave an impact. Why to leave an impact? When we support any company or any brand, for example, if I talk about Mudit, so Mudit has his own business. So Mudit, what is the name of your business? It's a Mac Mudit Tattoo Studio. Sorry? It's Mac Mudit Tattoo Studio. Okay, so for example, it's Mudit is having a brand. So let's suppose it's Mudit.com. Let's connect with that. So let's suppose it's a Mudit.com. If Mudit is supporting his brand with branding, okay, and then he's approaching to a customer with a different platform, then customer will be able to recollect and he'll be able to sell his product more. So it is a kind of a impact that he has kept in, he has like thrown in the people's mind, and he'll be able to generate more business just because he has left impact one day. For example, if Mudit has a shop of tattoo in mall, okay, and he has something very a kind of a sticker that he pasted on the door of his shop, okay, and that's something very different. So if somebody came, he saw that studio, that photograph, so that image will stay in his mind. So अगर उसको tattoo नहीं भी करवाना है, if somebody asked him someday that yeah bro I want to have a tattoo, so what he'll tell, okay, you go to that mall, I saw a very amazing tattoo design there, you can go to that shop. So this is called as leaving an impact. Do something that people should leave an impact. For example, if I talk about psychology and counseling, there are people in our house who are having background of psychology and counseling. So if we talk about psychology and counseling, so for example, we have Shalini. So Shalini is a psychologist or counselor. So example, Shalini is having his own blog, or Shalini runs his own Instagram or social media handle. So for example, every day she's sharing some content like solution of stress, solution of depression, solution of anxiety, or anything. Okay, so for example, he has 100 people in his contact. He is giving a good content. The people in his like follow list, they know that she's giving a good contact. So what those people do, if they will meet somebody having the same problem, they will refer that person to Shalini. You go to that lady, she is good, and I used to follow her content, but you can also approach her for any kind of service. So this is a kind of a process that we are leaving impact on people's mind, right? Second is to get more customer. This is the biggest thing that we all are here. With the help of marketing, if you have great marketing techniques, if you have digital marketing, if you have approach on digital marketing, social media marketing, nowadays this offline marketing is not possible because of COVID. Because earlier we used to have standees, we used to keep campaigning, we used to keep canopies, brochure distribution was there, but abhi COVID mein nahi hota. So everything is changed into digital. Ab sara
परफॉर्मा, मार्केटिंग स्ट्रक्चर, मार्केटिंग स्टाइल, सारी चीजें चेंज हो चुकी है. So now it's completely digitally. SEO, SMO, Google ads, Facebook ads, Instagram ads, like this. And the biggest marketing that is coming with AI, with the help of artificial intelligence. For example, you might have observed that today you are talking to somebody on phone about some product. For example, if you're talking that, bro, I want to buy a cycle, from the very next day you'll see that on YouTube, on Google, everywhere you'll see the cycle ads. So this is with the help of artificial intelligence. So this is how this marketing is, like this entire field is running, and the way people are making money, or the way people are doing marketing and increasing customers. One thing here is, you all should understand that when we talk about doing a business, when we talk about making money, some people think, oh, this is a very bad thing that somebody is doing. But do you think making money is a wrong thing? If we are not making money, how will we be able to earn bread and butter? So it's a very simple concept. People think only service is a noble job, but even if you want to do service, you need a full tummy, and for that you need money, right? So when we are into the marketing field, we have to understand that if whatever we do, the conclusion has to be money. Whichever path you go, whichever direction you follow, either you are giving, even if, see, there can be a pattern where you are making money and you are helping people. Things can be both ways, but things cannot be only one way, that you are only helping people, right? So this is the biggest thing that in marketing we have to understand. We don't have to be shy कि पता नहीं मैं ऐसा बोलूंगा, मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या समझेंगे. लोग तो वैसे भी कुछ ना कुछ समझेंगे. That is their own intelligence. You cannot do anything for them, right? That is their own intelligence, their own life cycle, their own journey, what they did in life. Even if you'll do whatever you'll do, they'll feel bad. This is normal human psychology. But you have to do marketing. We are here to understand that how to increase the clients, how to increase the business, right? So when we are talking about increasing the business only increases when we actually build a profile. One thing is very important here. I'll address that. See, whenever you are going into marketing or you're talking about business, make it a 1:10 ratio. This I cover in most of my session. 1:10 ratio means if somebody is paying you 1 rupee, give them a value of 10 rupees. This is the concept that we should follow. If you are into this particular option ना, that अगर आपको किसी ने 1 रुपया दिया, आपने उसको 10 रुपए की वैल्यू दी थी. This is the best thing that we are doing, and you'll get lot of clients, right? Okay, so making money, getting customers. Last is to bring a change in the society. That I already told you. Ki both things had to be parallel. For example, if I go before like Paytm arena, or before Paytm era, if we say, or Google Pay era, if we say. So we never thought that one day will come that everything will be soft money, right? We used to go to bank, we used to take money, hard money, we used to distribute it to all the like members. But nowadays everything is like soft money. We don't even touch money for a long time, right? So it is a kind of a change in the society. So when we are psychologists, when we are counselors, or when we are doing in any particular domain, we have to think about how to bring a change, right? So I want to ask something that you just now said, that when we buy something, a ratio of 1:10. Can you explain that again? Yes, ma'am. Ma'am, 1:10 means ki if we are providing somebody's service or taking money, right? So if anybody is paying you any X amount, give them a value of at least 10x. Okay, that is, and this specifically, this formula works in service sector. For example, psychology is a service sector. Okay, giving personal counseling sessions, giving trainings, giving therapies, this is all comes under service sector. Like, will it be a dietitian, tarot card reader, astrologer, or anything? Everything comes under service sector. So when we talk about service sector, because this is not a product कि हमने एक बार बना दिया फिर इसको change नहीं कर सकते. Okay, so if somebody is paying you any X amount, at least try to give them a value of 10x, right? Coming on the next slide. Okay, how to start with low cost. ये बहुत सारे लोग का क्वेश्चन होता है कि सर हमारे पास मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं है, एंड अब हम क्या करें. बहुत ज़्यादा हम जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी आर अ स्टार्टअप, और इफ वी आर रनिंग अ न्यू बिजनेस, और वी आर फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड, वी डू जॉब, सो we used to spend that money in normal daily life के routine में, we need money, right? So some people think they don't have enough amount of money for marketing, so what to do? So in that particular case, we can go for low cost marketing. I'll share you how we should go for low cost marketing, and then we'll talk about this in detail.
Okay, some basic tips I'll tell you about low cost marketing that we can do. We should do is, first is with the help of contacts. How many of you actually use your contacts? Contacts means your friends or your known people, or your college mates, your colleagues, or like anything. Because see, counseling or psychology or mental health is something that everybody has to understand, and everybody face this problem. ऐसा जरूरी नहीं है कि पागल होना ही साइकोलॉजी है, या बिल्कुल जब एमआर हो जाएंगे तभी साइकोलॉजी, ऐसा नहीं है. Anybody facing any kind of problem, they need a psychologist or they need a counselor, right? So what we have to do, first thing is personal contact. Personal contacts में हम कैसे अपनी अप्रोच बढ़ा सकते हैं? For example, if we, I don't know how many of you are having a habit of writing a content, right? How many of you write content? But if you are having a habit of writing a content, so if, for example, a very simple example I'll tell you, you take classes, right? You have taken, for example, you've taken a session on counseling masterclass, or any session in Counsel India, you took a session, entire session or two. How many of you actually make notes of it? And after making notes, how many of you write content? Okay, suppose there are people, let's take an example, there are people who write content, and if you every day just imagine a situation that after writing the content, you are sharing it with people in your contact. And every day you send a lot of these pictures, memes, this thing, that thing, and in the same time you imagine that you're telling somebody that good morning, to how to be successful. You're writing 4 tips there, you're writing 5 tips there. If you write how to start how to start your day fresh, how to be energetic the whole day, how to manage your workplace, if you're writing this small solution and sending it to people, I think this is really going to be a big change. And actually you're not doing marketing, but people will know about you. People will understand that yes, this person has a value. So maybe today they don't have a problem, but tomorrow they might have a problem, and then they can refer you to that person. And maybe today they don't have a problem, but they met somebody who's having a problem, so that person will actually refer him to you, that yes, there's somebody in my contact list, he is a psychologist, or he is a counselor, or he gives such kind of solutions, so maybe you can contact him. So personal contact is the best thing. Second thing is word of mouth. Like I told you that somebody has taken a service, for example, and you gave them a 10x service. So once he is very happy with the service, he'll refer to you to somebody else. For example, I gave you an example of Mudit's tattoo shop, that if somebody saw his door, that image, he went, he met somebody and he referred that person to him, and that is called word of mouth marketing. Okay. So next is meetings. Nowadays, these meetings are very limited. Before COVID, it was very frequent that people used to go to people used to go to like Saturday night parties. People used to go, they have meetings, they have outings. We used to go for workshops. We used to go for training programs. We used to go for gatherings. So we used to meet a lot of people, right? But nowadays the meetings are very much less. Okay. So, but here what we can do, I'll give you a short example how to meet people digitally. Guys, we all are specialists in some or the other field. हम सब किसी न किसी field में specialist हैं. Will it be any field, right? So try to conduct free webinars, try to conduct free small training sessions, try to conduct a live event. You all will be there on social media. You can just go live, ask people to attend your live. You can connect with them. You can tell them about various problems. You can have a proper topic. So these are the digital meetings that you can conduct. But the more meetings you'll conduct, the more clients you can get. अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर कस्टमर कैसे आएगा? कोई हमारे बैठे बैठे तो आ नहीं जाएगा. If somebody don't know that what service you provide, nobody is going to come to you, right? So try to join meetings, then share it with unknown. When you are sharing it with unknown, you have to enter into different WhatsApp groups. Try to talk with the admin. You can enter in that group. You can give them solutions. You can make content. You can share it with them. If you have a website or a landing page, you can connect the link of that page there. If you have a good social media handle, you know it's good, your graphics are good, you can connect your social media handles link there and post it there with the content. So it will be a good structure. So this is the way that you can do. And last is tell others a solution. ये सबसे बड़ा impact है. If you want to be a successful marketer, you have to work on solutions, because
in this world, everybody is running with problems. If you talk with somebody, he'll give you 10 problems. Okay, so be somebody who is a solution finder, not a problem finder. Okay, if you are having this skill of finding solutions, everybody will buy your service or everybody will buy your product. You give me any product or service now, I can tell you what kind of solution you can give it to people. But the only thing is consistency. People, what people do, they do it for 1 day, do it for 2 days, they do it for 3 days, then they'll be like कि तो कोई तो आया नहीं मेरे पास. तो ऐसे नहीं होगा. You have to continuously do this. People actually need time to understand your concept. You imagine your own like situation. For example, if you want to buy a phone, so it's not like the very first day you'll go, you'll buy a phone. You'll do a lot of research. You'll do a lot of research on that. You will do कि कहाँ पे सस्ता मिलेगा, कहाँ पे ज़्यादा value मिलेगी. Then you'll try to collect money. After 1 month, you will go and buy a phone. And then you imagine that just posting a content for 3 days or 10 days, your customer will come. No, this is not possible. You have to try this particular technique at least for 1 hour, 1 month to at least 45 days. Then only slowly you will start getting results. Okay, but yes, this is a like the best solution. If you don't have money and if you want customers, you should increase your solutions to people. Will it be social media? Will it be writing blogs? Will it be writing small articles, small content and posting it on WhatsApp, on Instagram, on Facebook, or any platform? There are a lot of people I have seen that they join other people's live. For example, some live is going on Instagram. They enter into that live and they'll write a content there in the comment box, and that is the people, they'll see your content. That if you've written something very impactful, they'll actually follow your page. Oh, there's one more technique. If you know that there is some page which is from your particular domain. For example, there is somebody in our meeting, she's from yoga background, so she went to some page. If she has and that person have a very good audience of yoga, so what she can do, she can just write her content on that particular person's post, and if that is very impactful, obviously people will follow you. So this is also the technique that people can use. Next will come. Okay, so this is the statistics that I want you to understand if somebody don't know about this, because this is recently our team has done a small research about this, and I think, I don't know, I was taking a webinar someday, so I told people about this that in India, if we are from psychology background, we are from counseling background, so we should know that what is the market size of this particular industry. How many of you know about what is actually the market size of people that who need mental health support, or what is the market size of counselors that we have in India? How many counselors are available? How many psychologists are available? If you want to do marketing, guys, you have to know about the competitions. अगर एक एरिया में एक मैकेनिक की शॉप है, तो उसको सब पता होगा कि कितनी मैकेनिक की शॉप्स वहां पर हैं. अगर एक एरिया में एक काउंसलर है, तो उसको पता होना चाहिए कि उस एरिया में कितने काउंसलर्स हैं, तभी वो मार्केटिंग कर पाएगा. Then only he'll be able to understand the competition, and then he'll be able to make strategies and plan accordingly. Okay, so for example, in India, the Indian population is 138 crore. This is the recent population I have mentioned there. And according to various researches done by Bombay Municipal Corporation, Times of India, and few more agencies, private agencies, we found that after COVID, after this pandemic, there are 50 crore of people who need mental health support. 50 CR. This is the people who have accepted that they have a mental problem and they need a support, they need a solution. Then we have next 10 crore of people, those who have a problem, but they are not ready to accept it just because of social pressure, or it can be XYZ reason. Okay. Third kind of people, the 10 CRAs, they have a problem, but they're not aware that they have a problem. But in survey, we found out that they might have a problem, but they're not aware about it. Okay. So if you calculate all these numbers, it will come around 70 CR. So guys, now I'll tell you a fact that to deal with 70 crore people, we have only 4.5 to 5 lakh counselors or experts in India who are trained in this particular field, and they will be giving solution. So just imagine the scope. कहाँ 70 crore और कहाँ सिर्फ 5 lakh लोग. So imagine the market expansion. But the only thing is, people need to give good services. People need to give best services, that you get a lot of clients who come for like
who come to you for taking your services. So if you talk about market, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साइकोलॉजी में स्कोप नहीं है, लोग अवेयर नहीं है साइकोलॉजी के लिए, so they don't take services, they don't need pay, they don't take paid services. ये आप तभी बोल सकते हैं जब आपके सर्विसेज में बहुत क्वालिटी नहीं. People don't pay you for service, people actually pay you for the value. So when they tell that they want a free service, or when they say they are not ready to pay, it means they cannot see value in your service. The day somebody starts seeing value in you, they will pay you whatever amount you'll ask. Right? So today we have to understand this. You can write this quote in your diary. People actually don't buy your service or product, people buy values. So ask this question to yourself. Are you in that particular state that you are actually giving values to the people? If you are not, you have to start thinking about the ways that you will be able to give values to the clients or to people. Okay. Next thing is, next line is, this is the ratio of psychiatrists and psychologists in India, that we have 0.301 psychiatrists and 0.047 psychologists over 1 lakh people. अब इतना कम रेशो है हमारा, इसका मतलब कि कितनी ज्यादा डिमांड है साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स की इंडिया में, बट हमारे पास नहीं है. So that is also one of the reason why Counsel India started this counseling master class, and we have given a slogan as Ghar Ghar Counselor. Like we want every family at least should have one counselor. That doesn't mean counselor as a designation or psychologist as a designation, but at least they should have a skill to handle it. मैंने बहुत सारे काउंसलर्स ऐसे, साइकोलॉजिस्ट ऐसे भी देखे हैं, उनके पास इतने सारे डिग्रीज और बंडल्स और सर्टिफिकेट्स हैं, बट दे आर एक्चुअली not very good in giving solutions to people. And they complain कि मेरे पास तो क्लाइंट रुकता ही नहीं है, मेरे पास तो कस्टमर रुकता ही नहीं है, एक सेशन में ही भाग जाता है. वो एक सेशन में इसलिए भाग जाता है क्योंकि आप उनको वो वैल्यू ही नहीं प्रोवाइड कर पाते. अगर आप किसी को वैल्यू नहीं देंगे, वो क्यों रुकेगा आपके पास, वो क्यों पैसे देगा आपको? Just because you are a psychologist, that doesn't mean they'll pay you. So you have to understand this. You have to equip yourself with skill set. A very best example I'll give you. How many of you know about Sandeep Maheshwari? I know. You know what degree he has done, ma'am? There I don't know. I don't know. Maybe How he is many of you know engineer. what degree He is Sandeep an Maheshwari engineer. has done? Sir, he's my neighbor. I have worked with him for 4 to 5 months. I know he's not even a graduate. We can't hear you, ma'am. Sir, he's my. Can you hear me, sir? Yeah. He's my neighbor. He is an. I have worked with him for 4 to 5 months. He's not even a graduate. Right. So does degree matter this much? Nowadays, Not at all. we Sir, are actually running behind collecting. I've seen like day before yesterday, I was seeing a CV. That person is telling me I have more than 110 or 120 certifications he has received, he has taken. So, but when I talk about skill set, I should not highlight on that. So basically the purpose is skills. The purpose is quality. The purpose is how much quality services you can give to people. People will come to you for solutions and value. I told you. People will not come to you that what number of certificates or bundles of this you have collected. But in India, what we do, sir, free webinar karna hai, certificate milega? This is the biggest question that we receive. We receive more than 500 questions like this in a month. Sir, free webinar ka certificate milega? I asked them, why do you want certificate? Sir, CV में लगाना है. CV में क्यों लगाना है? Sir, वो आगे के लिए future के लिए अच्छा होगा. I've never seen any company giving job on the basis of number of certificates you have collected. अभी तक तो मेरे इतने साल के करियर में मैंने कभी नहीं देखा. I have people from HR background. I have like from different companies. I am connected with the HR department and everything. I myself is doing recruitment since last 5-6 years. But मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी कंपनी ने किसी को हायर किया हो just because he has done 100 free webinars and he has certificates of that. This is a very impractical thing to understand. But people, if we are from marketing field, guys, I'll tell you one thing. Like I'll tell you a story on this, like about degree and sales and marketing पे. तो हमारे को आज यहाँ समझने वाली सबसे important चीज ये है
कि we have to work on giving values to people, not just providing services. Last thing is in this slide, 9,000 per person, 19,000 per person or 20 to 30 sessions I've written. I'll tell you कि ये क्या है कहानी. So it is like कि in India, the average cost to treat one people who is having very primary level of mental health problem, at least he spent 19,000 for that. एक सर्वे के थ्रू पता चला कि एक मिनिमम एक आदमी जब अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को शेयर करता है या फिर उसका सोल्यूशन ढूंढने निकलता है प्राइमरी लेवल की, नॉट अ सीवियर लेवल और नॉट इवन मीडियोकर लेवल, so he has to pay at least 19,000 for that, and he has to take at least 20 to 30 sessions. ये मिनिमम ऑन एन एवरेज है. ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि अगर हम अपने आप को रख के देखें कि क्या हम 19,000 के वैल्यू रख रहे हैं कि हम एक आदमी से 19,000 चार्ज कर सकें. पहला चीज ये. दूसरी चीज ये कि डू यू थिंक इफ वी आर गिविंग बेस्ट सर्विसेज एंड वी वांट टू डू अ सोशल सर्विस और वी वांट टू हेल्प सोसाइटी, कैन वी कट डाउन दिस कॉस्ट फ्रॉम 19,000 एंड कम टिल 10,000 12,000 एंड कवर मोर पीपल? देखो, या तो एक ही आदमी से ज्यादा ले लो या बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा कम करके ले लो. लाइक जियो डिड. जियो ने क्या किया, कम पैसा लिया, ज्यादा कस्टमर कवर कर लिया, प्रोडक्ट सस्ता दिया बट कस्टमर बल्क में बहुत सारा आ गया. डी मार्ट का एग्जांपल आप ले लो. डी मार्ट में आप डी मार्ट तो सुना होगा सबने, है ना, ग्रीन कलर का लोगो. Yes. डी मार्ट क्या करता है, कम सस्ता सामान देता है बट एक बार हम डी मार्ट जाते हैं पूरा ट्रॉली भर के सामान लेके आते हैं, है ना. क्यों? सस्ता है, प्रोडक्ट ज्यादा है. ऐसे ही हम भी कर सकते हैं. हम अपने काउंसलिंग या इस ट्रेनिंग इसके सेशंस के कॉस्ट कम कर सकते हैं बट इसके साथ हमें क्या होगा, ज्यादा बल्क में कस्टमर मिल जाएगा एंड इट विल एक्चुअली बी अ इनडायरेक्ट प्रॉफिट टू अस. Rather than putting a load on one person's pocket, we are actually collecting money and we are not also putting up a lot of burden on one person, right? So this can be a strategy, but इसके लिए भी आपको पहले उस लेवल तक जाना पड़ेगा कि आप इतना 10,000 12,000 भी लेने का आपको वैल्यू, मतलब you should have that value in you, तभी लोग आपको वो 10,000 या 12,000 भी देंगे. अदरवाइज साइकोलॉजी में तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. आपके पास लोग आएंगे, दे विल टेल सर फ्री में सेशंस क्यों नहीं कर देते, फ्री में सॉल्यूशंस क्यों नहीं देते. इट सेम लाइक यू आर गोइंग टू हॉस्पिटल एंड टेलिंग गिव मी मेडिसिन फॉर फ्री, राइट. if you go and talk to a lawyer, if you go and talk to a CA, he will not even give you a small free advice. He'll charge for that, and that is called as a consultation fees. You just sit with him and talk, and that is the change that Counsel India is also trying to bring in the society, that counseling or mental health industry is not something that only you should expect something for free. We also do a lot of hard work. We also put a lot of years nourishing our values and working on our values, doing all this hard work. So how you can expect that we'll give you something for free? If I'll go outside and I ask somebody, give me a free food, give me free shoes, give me free mobile phone, a person who is asking me free service over phone, that phone is also not free. We paid for that phone. Okay, so coming on the next slide, guys, after values, after this, I hope these statistics will help you to understand the market size or the market scope for you, that where you have to work. Next is, guys, I'll tell you the various platforms that we can use about if you want to do marketing. First is you can write down these platforms. That a lot of people ask me this question कि कहाँ पे सर marketing करें, पता नहीं चलता. So first is Facebook is there, Instagram is there, YouTube is there, LinkedIn is there, Quora is there, Gmail is there, WhatsApp is there, messaging is there, meeting is there, and reviews are there. Okay. अभी मैं Facebook पे एक करके आपको मैं थोड़ा डिटेल में बता दूँ so that it will touch you. Facebook is something why I have written it on the very top, because to be very frank, for psychology or for counseling, if you need a good client, if you need a best client, you cannot find it on Facebook. That's why I've written that on the very topmost part. Facebook पे हमें हमारे डोमेन के लोग बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर मतलब it is not about degrading Facebook's value or something, but Facebook पे अब spamming, frauds और मतलब unknown people, ऐसा crowd बहुत ज़्यादा आ गया, right? So we should try avoiding Facebook much. अगर आप Facebook use कर भी रहे हो marketing के लिए, so try to use your business page. Don't try your personal profile for marketing. Okay.
ये एक प्रिकॉशनरी मेजर भी है आपके लिए और ये एक इंस्ट्रक्शन भी है कि यस फेसबुक हैज अ वेरी गुड क्राउड, मतलब वेरी वास्ट क्राउड, बट आपको अच्छा क्राउड बहुत कम मिलेगा, वहां ज्यादा से ज्यादा लोग फ्रॉड्स और स्पैम वाले हैं, राइट? सो इफ यू आर यूजिंग फेसबुक, try to use it with a business page rather than your personal email, your personal profile or something. Try to make your business page. Facebook पे एक option होता है, you can make your business page and do marketing with that particular page rather than your own page, your own personal profile. Okay. Next is Instagram. Nowadays, Instagram is the best tool that we can use for marketing. Instagram पे हमारे पास post है, reels है, IGTVs है, live जाने का option है, comments है, हम दूसरों की लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, हम पर्सनल मैसेजेस कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। सो इंस्टाग्राम पे आप अपनी अगर टारगेट ऑडियंस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, सो व्हाट कैन बी टारगेट, व्हाट इज द टारगेट ऑडियंस दैट आई विल बी टारगेटिंग? अगर मैं अपने आप से पूछूं तो आई कैन टारगेट साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, राइट? आई कैन टारगेट स्कूल स्टूडेंट्स, आई कैन टारगेट कॉलेज स्टूडेंट्स, आई कैन टारगेट the people who are from social service background, I can target people who are from HR background. So I can actually find out on Instagram what kind of pages are there, what kind of people are there with this profile, and I can connect with them. जैसे ही मेरी धीरे धीरे प्रोफाइल बढ़ेगी, I'll keep posting content. And nowadays the biggest trend is going on is about reels. 10-second reel, give a solution, put a tune, post it. जितनी रीच आजकल रील से बढ़ रही है लोगों की मार्केटिंग में, एंड इट्स अ जीरो कॉस्ट मार्केटिंग, एवरीथिंग इज अबाउट क्रिएटिविटी. अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल है जो कोई और नहीं कर सकता, आप इंस्टाग्राम पे डालिए, ट्यून अच्छी सेट करिए, उसका एक साउंड अच्छा क्रिएट करिए, और अगर खुद से नहीं करके जो ऑलरेडी ट्रेंडिंग साउंड है वो अगर डाल के और अगर आप पोस्ट करेंगे तो वो और भी ज्यादा वायरल होगा, और भी ज्यादा उसकी रीच बढ़ेगी, राइट? सो बेसिकली इंस्टाग्राम आप यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग इज that you can use is YouTube. You all can have your own YouTube channels. Try to make your own videos. आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन से भी वीडियोस बना सकते हैं, आप अपने लैपटॉप से वीडियोस बना सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन होता है, you can make your videos with the help of, somebody is writing about Northeast recreation. Sir, I know only English. No problem, sir. I am converting it in both languages. You are not missing anything. Also, sir, please rename yourself. I cannot identify you. Northeast. You can please rename yourself. Okay. So basically, YouTube, we have to post content because on YouTube, if you are Mr. Tomlin. Okay, Tomlin. So on YouTube, you need to post your videos, right? अब होता क्या है ना, there are a lot of time when we think कि यार कुछ करना भी ना पड़े और मार्केटिंग भी हो जाए, राइट? ये सबसे बड़ा मिथ है. सो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि अब बिना कुछ किए कस्टमर कैसे आएगा? तो एवरी डे ट्राई टू डू वन थिंग, जस्ट फाइंड आउट कि आप दिन में उठे, जब मॉर्निंग में आपकी एक आप दिन अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्रेश होता है, ट्राई टू राइट डाउन सम कंटेंट एंड शूट इट. अर्ली मॉर्निंग उसको शूट कर दो, ठीक है? बहुत ज्यादा एडिटिंग की जरूरत नहीं है. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यूट्यूब पे इतना एडिटिंग तो नहीं आती सर, हमें ये नहीं आता, वो नहीं आता. देयर आर लॉट ऑफ सिंपल फ्री एडिटिंग टूल्स. फॉर एग्जांपल क्विक इज देयर, QUIK करके एक टूल है, ब्लू कलर का लोगो, इट्स ऑन प्ले स्टोर, इट्स इजीली अवेलेबल. दैट्स अ फ्री टूल. जैसे क्विक है, ऐसे और भी बहुत सारे मार्केटिंग के टूल, यूट्यूब इसके वीडियो एडिटिंग के टूल्स हैं जहाँ पे आप फ्री में वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं. ओके. फिल्मोरा के बहुत सारे क्रैक वर्जन आ गए हैं. फिल्मोरा के फ्री, अब तो फिल्मोरा का ऐप भी आ गया फ्री में, वहाँ पे आप फ्री में छोटे छोटे वीडियोस बना सकते हैं, एंड दैट इज आल्सो नॉट चार्जेबल. नेक्स्ट टूल दैट वी कैन यूज इज लिंक्डइन. आप लिंक्डइन को यूज करिए. लिंक्डइन की ट्रेनिंग पे मेरा खुद का एक आपके कोर्स में आगे चल के आप एक मेरा सेशन अटेंड करेंगे लिंक्डइन मार्केटिंग में. दैट्स अ फुल सेशन, 2.5 आवर्स का सेशन रहेगा, जहाँ पे मैं आपको लिंक्डइन की सारी चीजें समझाऊंगा. बिकॉज लिंक्डइन को समझाना इज नॉट अ स्मॉल थिंग. LinkedIn is entirely a different story. अगर LinkedIn marketing को हमें समझना है, so we need at least 2 to 3 hours. So in that webinar, in that session of mine, I'll tell you entire story of LinkedIn, how to make a profile, how to get a customer, how to use different tools on LinkedIn, and every small thing I'll tell you about LinkedIn. Next thing is Gmail. Gmail पे आपको, अगर आपका free Gmail है, so in one day you can post 500 messages on Gmail. Minimum. After that, Gmail will not allow you. So in 24 hours, you can post 500 messages on Gmail. And for that, you need email IDs. So today, I'll tell you how to get email IDs. But when you are actually writing mails to people,
make it either a kind of value added emails. Don't just sell ki I am there's this person and I am, for example, I am Zia Mirza and I am a psychologist. Please tell me if you want my service. Don't write these kind of emails. If you really want to, if you're writing email, try to add value to people. You can just write a small quotation about stress or depression, or you can write a small content on that and post it to. And at the end, you can write down, if you are seeking for more help, just feel free to contact me and drop your number. This is the way that email marketing is done. Don't directly try to push people to buy your service or to take your services. Next thing is WhatsApp. WhatsApp is the biggest tool that we use. Don't just use WhatsApp for chit chatting with friends. You can actually make a broadcasting list there. You can enter into different like-minded people's group. Okay, you can make your own community there. You can start building your own community. You can start building a group of people who are having the same mindset, who want your solutions, whom you think that they can take your service one day. Next is messaging. Messaging is like normal text messages that we send on phone numbers. Randomly, there are 100 messages to us in a day. So there are people whom you cannot connect directly on WhatsApp. To them, you can contact through messaging. Next thing is meeting, that we have already discussed in the previous slide, that how to do this meeting. Last is reviews. If you are already a psychologist, if you're already a counselor, or if you are thinking to become one of them, and if you're thinking to become your own setup, try to work on reviews from the very first day. I like, some people call it as a testimony, some people call it as a reviews. So you can either ask people to send you reviews on WhatsApp, like simply texting you, or you can make a Google form and you can take the reviews, or you can normally make your own Google profile and take people Google reviews. जैसे आपने देखा होगा Zomato पे star rating बोलते हैं ना आपको देने के लिए Google पे, or anybody will come to you and give you a service, they'll tell कि मैम Google पे rating दे दो, 6-star rating दे दो. So that rating is very important. Okay, that will actually increase the credibility. As I mentioned, people don't buy a service, people buy a value. So ये reviews से आपकी values पता चलती है लोगों को कि this much valuable Rumi is, this much valuable Ritika is, right? So actually this tells your values. Okay. Okay. So next thing is what all things are required. So before this, I will just stop for a small activity now. Let's do a small activity now. Guys, on the basis of this, I can see a lot of cameras switching on now. So on the basis of this understanding till now, content, और मैंने बात करी आपसे paragraphs की, content लिखने की, value की. Now what we'll do, we'll write a short, a kind of a 50 words ka article on a topic called as how to solve stress problems. This is the topic, how to solve stress problems. Okay, we will write a 50-word short article and we'll be putting it in the chat box. And for this particular thing, I am putting a timer of like 3 minutes. Okay, so the question is how to solve stress. I'm just putting an online timer for this. Okay, so here we have the clock tickling. So for 5 minutes, 50 words you have to write and post it in the chat box. And the topic is, I'm also writing it in the chat box. How to solve stress problems. How many words, sir? 50 words, ma'am.
Those who have done can just send the content in the chat box. Those who are done, please. Okay, I'll just read one. Rutvik has written, stress is horrifying. It drains you and make you have many other problems in your life with it. There are many ways to handle stress. Well, one of which is to do something you enjoy to do in between the busy day, at least for a short period of time. Healthy mind and is the new healthy. Rutvik, you can save this with you somewhere, this content, and you can use it as a good morning message tomorrow to the people you know. I can promise you will be getting a lot of good responses out of it. Thank you, sir. Thanks a lot. Next we have Priyansha. Stress is just most common problem nowadays. Youth is not working. Professional solutions, consult a counselor, medications, love yourself, interact socially, self-expression. Stress can lead to many diseases. Nice, Priyansha. Good content. You can also save it. Patel Saurabh has written, stress is more about thinking and breathing across outcomes. You all right. You all right. Good. Like, I don't know why you guys don't post it everything. Stress has become a serious problem. Shalini has written, these are some of the ways we can deal with stress. Northeast situation is written, how to solve problem by managing your time properly to cultivate new good habits and destroy bad character to have enough sleep. Take regular exercise, deal one problem at one, take small steps. Great. Okay. So here we go with the buzzer. Let's end this activity now. Okay. So those who have written, put it in the chat box and do one thing, just save it somewhere. By the end of the session, I'll give you a group, like we all will be added in a WhatsApp group, and there I request you to share this content in group, and there will be a lot of people who can read your content, who can read your solutions. Okay. So let's get back to the slide now. So what all things are required? अगर हमें marketing करनी है तो हमारे पास क्या-क्या चीजें चाहिए होंगी? First thing is images. We need images like the posters or the graphics that we use. Next thing is content is required. Next thing is you can write down this process. Whenever you'll think about marketing, you will be needing this proper structure, which will help you to actually which will actually give you a proper setup that कि अगर आप marketing करना चाहते हैं, so what all things you need, so that you'll be ready with the entire structure. So first thing is images, next thing is content, third thing is short videos, stories. Like everybody has a lot of stories in their life, so you can record those stories, you can share it with people. Questions to ask, some rhetorical questions you should be ready with that people will ask you, or you can ask people. Next thing is answers to give. You can be ready with the answers of those that you have written down. Next thing is engage, like you have to engage more and more people. Next thing is knowledge, and the last one is convince. Convince is if you are giving people a good value, people will get convinced easily. If you are not having a good credibility, if you're not having good feedbacks, if you don't have good reviews, people will question your values. But if you have everything well planned, well structured, people will actually have trust on you. Okay, so it will be easier for you to convince people, right? Next slide is reviews. I kept this slide here intentionally because many a time we get confused कि reviews लेने कैसे, कहाँ से reviews लेने, कैसे हम reviews इकट्ठे कर सकते हैं लोगों से. So first thing is we can have Google reviews. Second thing is reviews on Just Dial. ये भी एक platform है. I hope you might have heard about Just Dial. Just Dial reviews can be taken. Next thing is social media reviews. Like you can just ask people to go to your page and write their comment there. They can just write down in a comment section that I attended. Or what you can do, if you have taken a session today, you can take a screenshot. Like this activity we'll be doing by end of the session. I'll post one screenshot with you.
So what we'll do, we'll post that in on social media, on our own social media platforms. We will be sending that link in the WhatsApp group. The small activity we'll do so that you can understand कि marketing होती कैसे. एक पूरा हम end में करेंगे इसको activity को, सब ताकि ये चीज हम समझ पाए. Next thing is testimonies. Collect testimonies. Either it can be a video testimony, it can be a written testimony, or it can be anything. But collect testimonies. This is very important. Next thing is cards. If people really love you, if you're into the profession of counseling, if you're in the profession of psychology, psychotherapy, so ask. Like you cannot ask obviously, but people will send you cards. People will send you greetings, a digital greeting or hard copies or anything. That you can keep it like safely. You should not just keep it in a cupboard or something. You can actually tell this kind of story that yes guys, I received this card from this particular person today. Make a small video and post it on social media. You can actually record all these things and tell people that yes, you received this. The more you tell people about your success, the more people will get attracted towards you. Next is letters. If you're receiving any kind of letters, keep them in, like keep them safe. Last thing is certificates. Okay, you can, if you have given workshop somewhere, if you are invited as a trainer somewhere, if you did any training session somewhere, ask them to give you a certificate or kind of a recognition, so that you can post this, post that on your social media or on your website and tell people about your credibility. Okay. Next is how to analyze. Like, see, we all do marketing. Marketing तो हम सब करते हैं, लेकिन अभी कैसे पता चलेगा that we are doing a right marketing or a wrong marketing? So how to analyze? For example, if I'm studying in a school and that school has no tests, no examination, no assessments, so how we'll be able to understand that I'm studying right or wrong? Okay, so here are few analyses that we should analyze the kind of services that they're giving people. First thing is we have to understand or we have to notice the engagement. For example, मैंने अगर Instagram पे live पे, right, और Instagram live पे मुझे पता चलता है कि मेरे आज के live पे कितने लोग आए. Okay, I can note it down that today I did a live and there was 5 people who got engaged in my live, and this was the topic. You can next time if you go live, try to use some other topic, then write down that how many people came. Third time go live, write down the topic, notice it. Same way goes with the content. If you're posting some content, search, see that how many people liked the content. So this is a kind of a trial and error method. The more you try, the more research you do on the content, the more you'll be able to understand. So try to find out the engagement. आप जितना ज़्यादा engagement को समझेंगे, उतना ज़्यादा आपके पास customer आएगा और आप अपनी strategies पे काम कर सकते हैं. For example, you posted 7 content in 7 days, and on depression, you got maximum engagement. So try to post content related to depression as much as you can, because that is something that people want to know more in your follower list or in your target audience. Okay, so this is how you understand or analyze something and work on it. Next thing is people's contact. For example, you run an ad, you run a campaign, or you run something, and these many people's contacted you. You can analyze. So if you conducted 5 surveys or if you conducted 5 boot camps, so you can analyze actually कि मेरे पहले boot camp पे कितने वो थे, कितने लोग मैंने contact data दिया, second जब मैंने किया तो कितने आए, third time किया तो कितने आए. So every time you can have a proper record with you. So this will be helping you for analysis. See, all these things are not very easy. It's not a cup of tea. You need to do a lot of research. You have to be very much focused on this. अगर इतना ही आसान होता तो आज इंडिया में हर कोई अंबानी होता. Okay, life में marketing is the main root of the company, of any organization. So if you are an organization, if you are running your brand, if you are trying to think of getting more and more customers, this is not going to be very simple. You have to be very creative. You have to be very smart about ideas. You have to be very like a kind of a person who thinks out of the box when it comes to giving service to people, right? Next is meetings, as I already told you. Next is business. Business means, for example, I did a workshop on topic. Let's take a topic, anxiety after COVID, how to overcome anxiety after COVID. And you put some ticket size of that webinar. Let's take an example, 500 rupees. So from that particular webinar, you're able to make 10,000 money.
So when you did money a webinar next time, so just make a note of it कि आपने जब पहले वेबिनार किया था तो कितना रेवेन्यू आया था, सेकंड टाइम किया तो कितना रेवेन्यू आया, थर्ड टाइम किया तो कितना रेवेन्यू आया. Then analyze all three strategies. This is how we analyze our market side or our business. So next is self learning. That is a self question for you. If you did something, how much you are able to learn. हम लोग इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते. Maximum there are 90% of people who don't focus on this. They only do or they only pay somebody. They think कि पैसा दे दिया वही लोग करेंगे जो करेंगे, मेरा तो कोई काम नहीं. But if you are thinking about marketing, if you are thinking about to become a brand, or if you are thinking about become a best psychologist, having a lack of customers behind you, you need to be creative and you have to give that kind of service. And every day is a new day. You have to think, and every day you have to learn. No matter you have 20 years experience, 25 years experience, there's a small question that you have to ask yourself. If I am having a 25 years of experience, then how many people know me? Is it 1 million or 2 million? So if nobody knows you, if it's just some hundreds or thousands, I think you have to work on it. Number of years you lived a life or you worked doesn't mean that you have actually created your business or you have actually created that number of clients or that number of reach of that number of market expansion you have given. So don't confuse yourself with service, or don't confuse yourself with number of years and कि मैंने तो इतना काम किया अपनी लाइफ में, मुझे तो इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है. Everybody has to learn every day, right? Next is last is improvement graph. आप अपना एक improvement graph बनाइए कि आपने आज कितना काम किया है, कितने clients लेके आए हो आज के दिन में, कितने लोगों को reach किया है. Next day analyze again, make a graph. Third day analyze again, make a graph. Try to find out. Then on the day of holidays, on the day of working days, mid of the week, end of the week, try to analyze entire structure कि किस दिन ज्यादा engagement होती है, किस दिन ज्यादा लोग आते हैं, कौन से टाइम पे ज्यादा लोग आते हैं, कौन से डोमेन के लोग ज्यादा आते हैं, स्टूडेंट ज्यादा आते हैं, प्रोफेशनल ज्यादा आते हैं, किस टाइप के लोग ज्यादा आते हैं. You have to understand all these concepts. You have to analyze all these things very deeply and professionally. Okay, now we have a short break, and you all can take a short 5 minutes break, and we'll be back after 5 minutes. You can have a cup of coffee, tea, have some water, relax yourself, and then we'll be back in 5 minutes. Let me just put a timer so that
Come on, guys, let's get back to work. Okay, so next, let's start. Let me tell you a short story about like that I was telling that. Let me share my screen. Okay, so I'll tell you some techniques of market कि कैसे हम marketing करते हैं. How can we identify the right customer, the right person? कैसे identification करके हम उस पे काम कर सकते हैं. Before that, I want to share a short story. There is a bit funny story. पता नहीं किसने सुनी है कि नहीं. So there was a guy once. What happened? There was a guy in one company that person was having a lot of this thing outlets, okay, and they were having a store like the general stores होते हैं ना इसके. So he was having a lot of stores. So they one day they posted a post that they are looking for a salesman, okay, and they kept it like they need a person to be an MBA. That was the minimum criteria that they have said. They have said there. So one person came that one day. He just reached the office of the owner or the director, we can say. He went there. He told कि I want to apply for a salesman post, but I am not an MBA. So उसने बोला कि सर ये MBA के लिए है, ये तो आपके लिए नहीं है, आप कैसे काम करेंगे यहाँ पे. तो बोला सर सेल्स में करना है, MBA की क्या जरूरत है, आप सेल करवा के देख लो, नहीं करूँ तो फिर 1 महीने बाद निकाल देना, सेल ही तो करनी है. तो फिर उस ओनर को भी लगा कि यार ये तो काफी मतलब गट फील वाला बंदा है कि कह रहा है कि 1 महीने बाद निकाल देना, पैसे मत देना. उसने कहा कि 1 महीने काम करवाओ, अगर आपको पसंद नहीं आता तो निकाल देना, तो ये बहुत, और पैसा भी मत देना. तो उसको ओनर को लगा कि यार ये तो बड़ा मतलब अलग टाइप का इंसान है कि काम भी करवा लेना और अगर काम अच्छा नहीं लगे तो पैसे मत देना. तो he thought that he'll take a risk. He hired him. He sent him to one store और उसने वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया. After 1 month, what like he was running a lot of stores, different stores. So when he received that monthly sheet, okay, so he found that one store having the highest sale. Okay, ऐसा होता है कि अगर हमारे बहुत सारे ब्रांचेस हैं तो हम नोटिस करते हैं कि किसमें ज्यादा सेल हुई है, right? So he found कि यार he asked his PA or the HR why this store is having more sale. So that person told, sir, I don't know, there was a new guy who came and what magic he is doing I don't know, but that store is having a lot of sale, but that guy is not even educated, he is not having any MBA, but he is doing the awesome sale. Okay, so the owner what he thought कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, a person with no degree, how can he do this much sale or this much marketing or this much quality work he is doing. So what he did, he thought that I'll go to that particular store, I'll observe him, I'll see him what exactly he's doing. So the very next day what he did, he went to the store and he took a kind of a shade, like वो छुप गया एक कोने में जाके ताकि उसे कोई देख ना पाए, especially वो जो salesman है वो ना देख पाए. So the moment he saw him, what he was doing that time, he was standing with a client जो foreigner था, okay, तो वो उसको एक stick, fish stick बेच रहा था, जिससे हम fishing करते हैं ना, fishing stick जो होती है. He was selling that fishing stick. कि सर ये fishing stick लेके जाइए आप, और ये बहुत अच्छी stick है, इसमें आपको बहुत comfortable feel होगा, और आपका Sunday जो है, क्योंकि that was a weekend, that was a Sunday, आपका Sunday बहुत अच्छा होगा, आप घर पे बैठे होंगे, बोर होंगे, आप fishing करिए, तो आप ये stick लेके जाइए हमारी, और मैं आपको बढ़िया डिस्काउंट दिलवा दूंगा और आपको पूरा दिन आपका ऐसा मजे मजे में हो जाएगा. तो अभी क्या किया उसने वहां पे वैल्यू क्रिएट करी. दैट पर्सन टोल्ड ओके गिव मी दिस स्टिक, ही बॉट दिस स्टिक, उसने बोला ओके पैक करो और इसको भेज दो, ठीक है. जैसे ही वो जो पर्सन था, वो जो फॉरेनर था, वो जाने लगा वहां से, वैसे ही बोला सर एक काम करते हैं ना, आपने स्टिक तो ले ही लिया, बट क्यों ना आप एक इस मछली का दाना भी ले लो, हमारे यहाँ से दाना लोगे तो इतनी जल्दी मछली आएगी कि आप सोच नहीं पाओगे. तो बोला हाँ यार ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, नहीं तो मुझे दाना लेने के लिए कहीं और जाना पड़ता, एक ही जगह पे मिल जाएगा. तो उसने क्या किया, वहीं से वो दाना भी खरीद लिया मछली का. तो उसने बोला चलो दाना भी दे दो, दाना भी ले लिया.
फिर वो जाने लगा, कहा सर आप जा तो रहे हो लेकिन आप संडे को फिशिंग करोगे तो धूप भी होगी, तो आपको तो अम्ब्रेला की भी जरूरत पड़ेगी, तो आप अम्ब्रेला भी ले लो। तो वो फॉरनर बोला हाँ ये भी अच्छा आइडिया है यार। तो उसने बोला सर ये भी मतलब पैक कर दो। तो उसने वो अम्ब्रेला भी पैक कर लिया। तो बोला सर अब आप तो जा रहे हैं लेकिन आप एक बात बताइए, आपने जैसे अम्ब्रेला तो ले लिया, बट आपको नहीं लगता कि आप जब बैठ के फिशिंग करेंगे तो आपको भूख भी लगेगी? तो व्हाई डोंट यू ट्राई आवर चिप्स। आप ये पैकेज चिप्स लेके जाइए, ये आपको एकदम मजेदार टेस्ट देंगे और यू विल एंजॉय योर वीकेंड। तो उसने वो बोला हाँ ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। उसने चिप्स भी ले लिया और उसका जो ओनर था वो ये सारी चीजें एनालाइज कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था बड़े ध्यान से कि वो कैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्रोडक्ट सेल करते आ रहे। फिर लास्ट में वो जब वो जाने लगा तो बोला सर सब कुछ तो हो गया लेकिन एक और बात बोलूं आपसे। बोला क्या? सर ये सारा सामान तो ले लिया लेकिन लेके किस में जाओगे? सो व्हाई डोंट यू ट्राई न्यू बैग। ये हमारा भी नया बैग आया, लाइट वेट है, सालों साल चलता है। तो बोला हाँ ये भी अच्छा आइडिया है। तो उसने फिर एक बैग भी दे दिया। तब तक उसका जो मालिक था, जो ओनर था, वो निकल के आया, वो बोला बस कर, और कितना बेचेगा एक ही आदमी को। तो दिस इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल स्टोरी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये था कि इफ वी वांट टू डू मार्केटिंग, you don't have to be an MBA, you don't have to be having all those degrees, या फिर इतना आपको कि मैंने तो ये नहीं किया, मैंने तो वो नहीं किया, मैं मार्केटिंग कैसे कर सकता हूँ। if you have a creative mind, if you have a good vision, if you can actually show value to your customers or clients, people will love your service. This is the very simple thing that we have to understand. Okay, that person has not done an MBA but he can show value कि अगर वो उसके स्टोर से सामान खरीदेगा तो उसे क्या मिल जाएगा वहां पे, और इसी के बेसिस पे वो इतने सारे प्रोडक्ट एक ही बंदे को सेल कर देता है। एंड दिस इज द क्वालिटी दैट इज द रीजन दैट ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं जहां भी काम करूंगा मैं बिजनेस लाके दूंगा। ओके, so coming out of the story, let's go on to the techniques now, like what all techniques we should use while doing marketing, or what all small things we should keep in mind about when we think of doing marketing. First thing is market research. A small example, like in the starting of the session I told you कि इंडिया में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोगों को जरूरत है, कितने साइकियाट्रिस्ट हैं, कितने साइकोलॉजिस्ट हैं, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें रूमी की, तो रूमी किसी एक पर्टिकुलर टाउन में होंगी, तो रूमी एक रिसर्च कर सकते हैं कि उस टाउन में कितने लोगों को वो प्रॉब्लम होती है, एक छोटी सी सर्वे कर सकती है। रूमी ये फाइंड आउट कर सकती है कि उनके एरिया में कितने काउंसलर्स हैं। रूमी ये फाइंड आउट कर सकती है कि उनके एरिया में कितने साइकोलॉजिस्ट हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ मार्केट रिसर्च। कितने लोग उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, कितने लोगों को सॉल्यूशंस देने चाहिए, कितनी गवर्नमेंट पॉलिसीज वहाँ पे हैं, कितनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे काउंसलिंग को सपोर्ट करती हैं, कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे काउंसलर्स हैं, कितने स्कूल्स हैं जहाँ पे काउंसलर्स हैं। ये सारी मार्केट रिसर्च होती है। ऑन द बेसिस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च यू कैन डू एग्जैक्ट और परफेक्ट मार्केटिंग। नेक्स्ट थिंग इज identify pain points, find problems and see demand. This is the only tool if you want to be a good marketer. For example, अगर हम बात करें, let's take an example of Paytm or let's take an example of Zomato. Zomato ने क्या पेन पॉइंट आइडेंटिफाई किया कि लोगों को खाना खाना है लेकिन घर बैठे खाना है, जाना नहीं है कहीं भी। This is the pain point that Zomato identified. He found a problem. The problem is people want to eat एकदम डिलीशियस फूड बट they don't want to go out of the home. They want at the doorstep. This is the problem that they found. क्योंकि लोगों को लगता है कि वहां जाएंगे, फिर वहां सैनिटेशन होगा, फिर बैठने का अच्छा होगा कि नहीं होगा, फिर ये होगा कि there are a lot of questions. So this is the problem that Zomato found. Next thing is see demand. खाना तो सब खाते हैं ना, इसका मतलब डिमांड तो बहुत ज्यादा है। हर किसी का मन होता है कि हम डेली जो खाना खा रहे हैं उससे थोड़ा सा ब्रेक लें, कभी बाहर का खा के देखते हैं, कभी हल्दीराम का खा के देखते हैं, कभी किसी रेस्टोरेंट का खा के देखते हैं। सो दिस इज द डिमांड। जोमेटो ने क्या किया, और दूसरी बात, हल्दीराम की डिमांड क्या है कि उनको कस्टमर्स चाहिए, मोर एंड मोर कस्टमर्स। तो जोमेटो ने क्या किया, कस्टमर को रेस्टोरेंट से जोड़ दिया। दिस इज द पिन पॉइंट दैट दे फाउंड एंड दे कनेक्टेड। दिस इज द बिजनेस दैट जोमेटो फाउंड। तो ऐसे ही करके हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारे क्लाइंट्स का, हमारे कस्टमर्स का पेन पॉइंट क्या है और हमारे पास ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो हम लोगों को दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मेक अ गूगल फॉर्म।
आई होप एवरीबडी नोज कि गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाता है. गूगल फॉर्म बनाइए, गूगल फॉर्म को कंटेंट के साथ फ्लोट करिए, अलग अलग डेटा लोगों का इकट्ठा करिए, सर्वे करिए, सर्वे फॉर्म्स बनाइए. ऑल दीज डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स विल हेल्प यू. आप एक द पीपल हु द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, आजकल तो उनके सिनॉप्सिस में भी गूगल फॉर्म यूज होते हैं. व्हेन दे सबमिट सिनॉप्सिस, दे डू रिसर्च, दे मेक गूगल फॉर्म्स. विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म्स ओनली दे डू ऑल दिस रिसर्च एंड सर्वेज. आप उसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे से फ्रेम करिए. If you are a psychologist, you can do a survey that how many people are looking for stress counselors in your area. You can circulate that form in your known people's group or WhatsApp group or social media पे आप वो form circulate कर सकते हैं. You can ask your friends कि वो आपके लिए वो form circulate करें और आपके पास वहाँ पे से content आ जाए. जैसे आपके पास content आ रहा है, आप उन लोगों से connect करिए, फिर आप उन लोगों से बात करिए. बिना बात करें तो फिर आपके पास कोई आएगा नहीं ना. आप लोगों से जैसे जैसे बात करेंगे, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे. So this is a way how can you use your Google form or you can make your survey forms. Next is technique. अभी हम बात करते हैं टेक्निक की, कि अगर हम टेक्निक को देख रहे हैं तो टेक्निक कैसे यूज हो पाएगी. सबसे पहली टेक्निक हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि सेटअप अ वेबसाइट. देखो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ. If you are really serious about getting clients, if you are really serious about doing a business, you need a website. Okay? आपको लोग पैसा क्यों देंगे? आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए देंगे. अगर आपके पास वेबसाइट है तो ही आपकी क्रेडिबिलिटी शो होगी बहुत अच्छी. ओके, सो यू नीड अ वेबसाइट. सो पहले हम काम कर सकते हैं अपनी वेबसाइट फॉर्मेशन पे. बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, मैंने 6 to 10,000 लिखा है. बट आजकल ऐसे ऐसे स्टार्टअप भी आ गए हैं, ऐसे ऐसे वेब डेवलपर्स आ गए हैं जो फ्रेशर्स हैं, बिगिनर्स हैं, कॉलेज पास आउट्स हैं रिसेंटली. 1000, 1500, 2000 में भी आपकी एक छोटी सी अच्छी सी ब्यूटीफुल वेबसाइट बना देंगे. वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है. अब आप बोलोगे कि ढूंढना कहाँ से? आप गूगल पे जाइए, आप सर्च करिए, आपको मिल जाएंगे. आप लिंक्डइन पे जाइए, लिंक्डइन पे वेब डेवलपर सर्च करिए, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, वेब डेवलपर स्टूडेंट्स को आप कॉन्टैक्ट करिए. उनको सिंपल बोलिए कि आई वांट अ वेबसाइट, इफ यू कैन डू दिस फॉर मी आई विल पे यू 1500 2000 रुपीज़ में आजकल वेबसाइट बन जाती है. आपको बहुत ज़्यादा हाईटेक वेबसाइट लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए खर्च करके बनाने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ क्रेडिबिलिटी के लिए एक छोटा सा अपना वेबसाइट चाहिए. आपको उसका डोमेन नेम चाहिए, उसकी होस्टिंग चाहिए, आपकी वेबसाइट का काम हो जाएगा. सो कोशिश करिए कि एक वेबसाइट आप जरूर अपनी बनवाएं. नेक्स्ट थिंग इज कि आपका जब हम बात करते हैं क्या बोलते हैं वेबसाइट बनाने की, तो वेबसाइट में आप अपनी एक थीम सेट करिए. अगर आपको थीम चाहिए तो मैंने इस पर लिखा हुआ है कि आपको थीम्स कहाँ मिलेंगी. mythemeshop.com करके एक वेबसाइट है, एक टूल है, वहाँ पे आपको फ्री में थीम्स मिल जाएंगी जो मैच करेंगी आपके सर्विस से. अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आप टैरो कार्ड रीडर हैं, अगर आप योगा थेरेपिस्ट हैं, अगर आप म्यूजिक थेरेपिस्ट हैं, तो अपनी थीम से रिलेटेड ही अपनी वेबसाइट पे, मतलब अपने अपने सर्विस से रिलेटेड अपना थीम रखिए अपनी वेबसाइट का, ताकि अगर कोई भी आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो ऑटोमेटिकली उसको पता चले कि यस ये बंदा ये सर्विस देता है, मुझे इससे ये सर्विस चाहिए. ठीक है. और इसमें सारे बटन्स होते हैं, कॉन्टैक्ट अस बटन, कॉलिंग बटन, दिस बटन, देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स इन दिस. ओके. नेक्स्ट थिंग इज ईमेल मार्केटिंग. सॉरी, वर्डप्रेस इज आल्सो अ टूल. देन देयर इज वन मोर टूल कॉल्ड एज GoDaddy. ये तीनों जगह पे आपको थीम्स मिल जाएंगे और आप चाहें तो होस्टिंग भी ले सकते हैं यहाँ से. ये तीनों ही स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म्स माने जाते हैं. माई थीम शॉप हो गया, वर्डप्रेस हो गया, GoDaddy हो गया, वही सेम है. 1000, 1500, 2000 रुपए के एक्सपेंसेस में आपकी वेबसाइट फॉर्म हो जाती है. यहाँ से आप किसी फ्रीलांसर से नहीं करवा के अगर इनसे करवाते हैं तो भी आपकी वेबसाइट बन सकती है. आप ये लिख सकते हैं वेबसाइट्स. नेक्स्ट इज ईमेल मार्केटिंग. जैसे कि मैंने बताया, अगर आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप मेलचिम्प एक टूल है वो यूज कर सकते हैं. जीमेल आर देयर, बट जीमेल में वही मैंने बताया आपको 500 का रेस्ट्रिक्शन रहता है. और कोशिश करिए कि अगर आप किसी भी बंदे को ईमेल भेज रहे हैं तो 5 ईमेल्स का साइकिल चलाइए. आप उसको एक बार में भेज के मत छोड़ो. एटलीस्ट ट्राई टू सेंड द सेम पर्सन सेम ईमेल 5 times, देन ओनली ही विल बी ओपनिंग दैट. अगर आप एक बार करके छोड़ देंगे, जस्ट इमेजिन दैट हाउ मेनी ईमेल्स यू रिसीव इन अ डे. आई थिंक मोर देन 100. एंड हाउ मेनी ईमेल्स यू ओपन. आप वही ईमेल ओपन करते हैं जिसमें आपको लगता है बहुत ज्यादा वैल्यू है, या सब्जेक्ट लाइन बहुत अच्छा लिखा हुआ है, या वो ईमेल जो बार बार आपको आ रहा है, आप सोचते चलो यार आज तो खोल के देख लो इसको क्या है इसके अंदर. सो ट्राई कि आप एक ईमेल कम से कम एक बंदे को 5 बार भेजें. आप अपनी ईमेल लिस्ट जो फॉर्म कर रहे हैं, ट्राई टू मेक इट इन सच अ वे दैट इट शुड बी एटलीस्ट लाइक
5 times सेम पर्सन। ओके, सो ये साइकिल हम फॉलो कर सकते हैं। मेल चिम्प में आपको बहुत सारे फ्री वो मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं, ईमेल टेम्पलेट्स। सिंपल ईमेल नहीं लिखें, टेम्पलेट्स यूज करें, कलर्स यूज करें, ऑटोमेटिकली बिल्ड टेम्पलेट्स होते हैं, आपको बस वहाँ पे कंटेंट डालना है, ईमेल अपने आप बना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, सिंपल कट कॉपी एंड पेस्ट है वहाँ पे। ओके, मेल चिम्प इज अ टूल। मेल चिम्प के अलावा और भी बहुत सारे मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग के टूल्स, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट कोई ना कोई यूज जरूर करें। सिंपल शाबी सिर्फ लिखे हुए ईमेल्स ना भेजें, रेदर देन फ्रेम इट इन अ वेरी स्मार्ट वे एंड देन सेंड इट। लास्ट इज नॉट लास्ट, नेक्स्ट इज टेक्निक्स। टेक्निक्स में आता है हमारा कॉपीराइट्स, आता है कॉल टू एक्शन, आता है। दो चीज आती है। पहली चीज है गाइस, व्हेन यू आर डूइंग मार्केटिंग ना, आपको इफ्स एंड बट्स, डूज एंड डोंट्स दोनों चीज पता होना चाहिए। नेवर ट्राई टू ब्रीच द कॉपीराइट लॉ। अगर आपके ऊपर किसी ने भी कॉपीराइट थेफ्ट का केस लगाया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपको। हम जब मार्केटिंग करते हैं तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज, आप किसी का भी सेल्स का पेज कॉपी नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज, आप किसी के वीडियोस कॉपी नहीं कर सकते, आप किसी का ब्लॉग कॉपी नहीं कर सकते, आप किसी के पोस्टर्स कॉपी नहीं कर सकते, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, आप किसी का कंटेंट एज इट इज कॉपी पेस्ट करके अपने पे नहीं डाल सकते। आप स्टडी मटेरियल कहीं से कॉपी नहीं करके और किसी और को दे सकते हैं। आप पीपीटी किसी की कॉपी नहीं कर सकते। ये सारी चीजें कॉपीराइट से आती है। लोग करते हैं, करते होंगे बिल्कुल, बट हमें गलत नहीं करना। जो करता है वो उनकी प्रॉब्लम है, बट ये सारी चीजें कॉपीराइट एक्ट के अंदर आती हैं, और हमें कोशिश यही करनी कि हम इन लॉज को ब्रीच ना करें। हम काउंसलर्स हैं, हम साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर हम ही गलत करेंगे तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे। ओके, सो इफ यू नीड कंटेंट, आप दूसरों का देखो, आप दूसरों से आइडिया लो एंड देन फॉर्म समथिंग ऑफ योर ओन। आप अपना खुद का कुछ बनाओ, उसमें क्रिएटिविटी कर सकते हो, बट एज इट इज कॉपी पेस्ट मत करो, अदरवाइज आप पे केस हो सकता है। दिस इज अ वेरी लीगल थिंग दैट आई एम टेलिंग यू। ओके, नेक्स्ट इज कॉल टू एक्शन। आप अगर कोई भी पोस्टर बना रहे हैं, कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं, कोई भी कुछ भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट एक्टिविटी शुड एंड विद अ कॉल टू एक्शन। मतलब कि अगर मुझे आपसे इंटरेस्ट है तो मैं आपको कैसे कनेक्ट करूं, वेल इट बी अ फोन नंबर, या ईमेल आईडी, या वेबसाइट, या कैसे मैं आपसे कैसे कांटेक्ट करूं। तो कॉल टू एक्शन इज अ काइंड ऑफ अ बटन दैट पीपल यूज कि आपसे वो कांटेक्ट करें। अगर आपने काउंसिल इंडिया में कांटेक्ट किया होगा, सपोज करो पहले के, अगर आप विजुलाइज करोगे तो वहां भी एक कॉल टू एक्शन बटन रहा होगा, जहां आपने फॉर्म फिल किया होगा, हमारे पास आपका क्वेरी आई होगी और हमारे रिलेशनशिप मैनेजर ने आपसे कांटेक्ट किया होगा। सो ट्राई टू ऐड अ कॉल टू एक्शन बटन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन नेक्स्ट इज ओवर। कहाँ यूज करना है कॉल टू एक्शन? ओवर एवरी पेज, स्टार्ट विद अ वर्ब, create urgency, visibility, low risk, use pain points and desires. I'll explain you all this small points. First thing is call to action की जब हम बात करते हैं तो call to action कहाँ यूज करना है? जितने भी आपके पेजेस हैं, हर पेज पे आपको call to action यूज करना है। That how to create a call to action? For example, if you want to know more, contact me. Then you can write down email. This is the call to action. If you are sending somebody an email, at the end of the email you can write down, for more solutions contact me, for more services contact me. This is a call to action. So for every page you should use it. Start with a verb. Verb means it should look beautiful, it should not be shabby, it should be very short, very precise, very attractive. Next thing is create urgency. So for example, when you want to create urgency, what you can do, contact me for offer. If you want to grab this offer, contact me today. So this is how you're creating urgency. So when you are creating urgency, people will contact you more, or they will contact you immediately. This is how you create urgency. Next thing is visibility. Call to action button एकदम छोटा सा नहीं लगाना है, it has to be big one and it should be visible. क्योंकि मेन पॉइंट क्या है मार्केटिंग करने का, लोगों को वैल्यू तो दे रहे हैं, बट डाटा तो भी तो लेना है ना, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी तो लेना है ना, तभी तो आप कॉन्टैक्ट करेंगे उनसे। तो विजिबिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए वहां पे। नेक्स्ट इज लोअर रिस्क। लोअर रिस्क का मतलब है कि कॉल टू एक्शन के चक्कर में कभी ऐसा भी होता है कि हम इतनी ज्यादा उसमें मार्केटिंग डाल देते हैं कि लोग हम पे इंटरेस्ट लेना ही खत्म कर देते हैं। तो एक रिस्क हो जाता है हमारे पास कि कहीं ना कहीं ये बंदा हमें सर्विस में इंटरेस्ट ना ले, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत ज्यादा मतलब हमें कॉल टू एक्शन को एकदम मतलब पिंची भी नहीं बनाना है। आप पूरा कंटेंट आपने लिखा है तो कई लोग क्या करते हैं, ऊपर भी कॉल टू एक्शन, बीच में भी कॉल टू एक्शन, एंड में भी कॉल टू एक्शन, इतने कॉल टू एक्शन भर देते हैं उसमें पेज में कि वो बहुत ज्यादा मतलब शाबी लगने लगता है। सो ट्राई कि आप एक ही बार रखें हर पेज में, बट उसको बहुत ही ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट करें ताकि रिस्क कम रहे।
यूज पेन पॉइंट्स और डिजायर्स। पेन पॉइंट्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपको पता है आजकल लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्हीं प्रॉब्लम को टारगेट करो। फॉर एग्जांपल इफ योर ऑडियंस इज अ स्कूल स्टूडेंट और अ कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? करियर के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, फ्यूचर के रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, एग्जाम एंजाइटी होती है, पेरेंटल काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है कि पेरेंट से बनती नहीं है हमारी, हम उनकी अंडरस्टैंड नहीं करते, वो हमें अंडरस्टैंड नहीं करते, ये प्रॉब्लम्स होती है। तो बेसिकली उस एरिया को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हम उसी को टारगेट करें और वैसा ही कंटेंट डिजाइन करें और वैसे ही लोगों को कनेक्ट करें। तो इससे क्या होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा लोग कांटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज टेक्निक। अभी ये मैंने इस पे रखा हुआ है टेक्निक का फंडा यहाँ पे, कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं मेरे से कि सर पोस्टर तो हम बना रहे हैं बट पोस्टर बनाना कैसे है? क्योंकि कुछ लोगों को मैंने पोस्टर्स देखे हैं, आई हैव सीन लॉट ऑफ पोस्टर्स, उस पर इतना ज्यादा कंटेंट डाल देते हैं लोग कि एक्चुअली वो उसको देखने का मन नहीं करता, इतना शैबी हो जाता है ना वो पोस्टर, और हमारा जो पर्पस होता है ना पोस्टर बनाने का वो भी उसमें रिजॉल्व नहीं होता। सो कीप दिस आइडा फॉर्मूला इन माइंड। आई विल टेल यू कि आइडा फॉर्मूला कैसे होता है, कैसे ये काम करता है। सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। ये चार इस आइडा फॉर्मूला में टूल टेक्निक्स हम यूज करते हैं आइडा में। अभी हम अगर बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो इंटरेस्ट ही क्या है? हम लोगों में जब इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, सॉरी अटेंशन क्रिएट करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, तो हम क्या करते हैं? आर्टिकल्स लिखते हैं, एडवर्टीजमेंट शो करते हैं, वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं, या फिर हम अलग अलग वेबसाइट के पेजेस हम लोगों को थ्रो करते हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। हम वेबिनार्स करते हैं, ऑनलाइन लाइव शोज करते हैं, टॉक शोज करते हैं, ये सारी चीजें क्या होती है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करती हैं, जो कि साइकोलॉजी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा जरूरत है जिसकी, राइट। सेकंड आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं? हम वेब कंटेंट बनाते हैं, न्यूज लेटर्स बनाते हैं, सोशल मीडिया ब्लॉग्स बनाते हैं, ईमेल कैंपेन्स रन करते हैं, इन सबसे इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट इज डिजायर। डिजायर पे हम क्या करते हैं? लोगों को ब्रोशर्स देते हैं, लोगों को फ्री स्टडी मटेरियल देते हैं, लोगों को रिटन फ्री कंटेंट देते हैं, लोगों को फ्री वीडियोस देते हैं, वीडियो लेक्चर्स देते हैं। सो इस तरीके से हम अपना लोगों में डिजायर क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट इज एक्शन। अब एक्शन के टाइम पे हमें केस स्टडीज चाहिए, टेस्टिमनीज, डेटा शीट्स और ई लर्निंग। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसको और डिटेल में बताता हूँ ताकि आप लोग इसको क्लियरली समझ पाए क्या है। सो फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर पोस्टर एज एन एग्जांपल, ओके। अभी इस पोस्टर में इफ यू सी व्हाट इफ वी गो एज पर आइडा फॉर्मूला, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट बटन है, डिजायर है, एक्शन, अटेंशन है, एक्शन है। अभी अगर मुझे कस्टमर का अटेंशन ग्रैब करना है तो मैंने एक ऐसा ऑफर थ्रो किया है जो लोगों का अटेंशन ग्रैब करेगा यहाँ पे, ठीक है। सो 99 ओनली इज दैट काइंड ऑफ अटेंशन, ठीक है। आई ए हो गया अटेंशन, आई इज इंटरेस्ट। लोग इंटरेस्ट क्यों लेंगे? क्योंकि आई एम गिविंग फ्री मार्केटिंग टूल्स। मैं जो वेबिनार करता हूँ उसमें मैं काफी सारे फ्री मार्केटिंग टूल देता हूँ, सेशन का मटेरियल देता हूँ और डिजिटल सर्टिफिकेट देता हूँ। तो ये क्या हो गया? ये इंटरेस्ट लोगों का क्रिएट हो गया, ओके। नेक्स्ट इज डिजायर। अब डिजायर में क्या, लोग ये वेबिनार क्यों कंडक्ट करें, ये क्यों अटेंड करें? तो इट कम्स की सेल्फ मार्केटिंग और ब्रांडिंग में है, फॉर पीपल एस्पायरिंग टू बिल्ड फ्यूचर इन साइकोलॉजी। तो कहीं ना कहीं ये एक डिजायर बन गया, ठीक है। अभी हमने तीन चीजें कवर करी यहाँ पे, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर। लास्ट इज एक्शन। अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि कॉल टू एक्शन लगाना है यहाँ पे, कॉल टू एक्शन। तो दिस इज द वे वी आर पुटिंग अ कॉल टू एक्शन कि इस दिन पे है और रजिस्टर नाउ करके मैंने अपना फोन नंबर भी यहाँ कंपनी ने डाला हुआ है। तो ये क्या हो गया? ये पूरा हमारा एक एक्शन होगा कि फाइनली अगर कोई मेरा वेबिनार अटेंड करना चाहता है तो वो मुझसे कैसे कॉन्टैक्ट करेगा। अब ये पोस्टर की अगर हम प्लेसिंग देंगे तो बहुत ज्यादा भरा भी नहीं है पोस्टर, इसमें एक इमेज भी यूज हो रही है, जो बंदा यहाँ पे सेशन लेने वाला उसकी फोटो भी आ रही है, ब्रांड भी आ रहा है, लोगो भी आ रहा है, और हमने जितने फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे वो सारे यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। सो दिस इज द वे वी यूज आइडा फॉर्मूला, ओके। इतना क्लियर है? इफ दिस इज क्लियर प्लीज राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन नो you guys got this. Write down clear in the chat box if everything is clear till here. Please show the pyramid again, Roshni. Roshni, I'll show you the pyramid. Yeah, this is the pyramid. I'll be here for next 30 seconds and I'll move forward. You can see a lot of people writing clear in the chat box. Great.
Okay, so these are the websites that you can write down about free marketing. मैं आपको ये चैट बॉक्स में भी लिख देता हूँ. फ्री posters. जैसे कि आप कई लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर पोस्टर्स कहाँ से मिलेंगे. I'll put this in the chat box. इन वेबसाइट्स पे आपको फ्री पोस्टर्स मिलेंगे, आपको कोई पैसा नहीं पे करना. मैंने चैट बॉक्स में डाल दिए सारे. और ये इन वेबसाइट्स पे आपको फ्री शॉर्ट वीडियोस के क्लिप्स आप उनको एडिट कर सकते हैं. सिर्फ आपको इमेजेस मिल जाएंगी और आपको सिर्फ उन पे कंटेंट लिखना रहेगा. आपको फ्री में मिल जाएगा, कोई कॉपीराइट इशू नहीं आएगा इनका, बिकॉज यहाँ पे सारे पोस्टर्स फ्रेश होते हैं. और इसमें कुछ फ्री भी हैं, कुछ जब आप ज़्यादा ही स्पेसिफिक एकदम हाई क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन लोगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे फॉर दैट. बट बेसिक काम चलाने के लिए आपको यहाँ से बहुत सारे फ्री पोस्टर्स और फ्री कंटेंट मिल जाता है. ये जो मैंने चैट बॉक्स में शेयर किए हैं कुछ वेबसाइट, कैनवा है, बीफंक की है, पिकमॉन्क की है, फ्री पिक है, पिक्साबे है. ये बहुत अच्छे टूल्स हैं जहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, फ्री मार्केटिंग पोस्टर्स बना सकते हैं. इनमें से कईयों के ऐप भी हैं. फॉर एग्जांपल कैनवा का तो ऐप है, ऐप पे ही बन जाते हैं, मोबाइल से यूजर फ्रेंडली है, इजीली आप लोग बना सकते हैं. छोटे वीडियोस भी बन जाते हैं 5 सेकंड्स के, 10 सेकंड्स के, और पोस्टर्स भी बन जाते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज अ शॉर्ट फीडबैक. जैसा आई मेंशनड यू कि हमें फोकस करना होता है अपने रिव्यूज पे. हमारी टीम को भी इसमें काफ़ी काम करना पड़ता है कि क्या रिव्यूज हमारे लोगों ने दिए हैं. तो मैंने एक छोटा सा लिंक डाला है चैट बॉक्स में. आई रियली रिक्वेस्ट यू कि आप इस चैट बॉक्स इस पर क्लिक करें और जाके इस पर फीडबैक दें छोटा सा, ताकि हमें भी पता चले कि हम कैसे सर्विस दे रहे हैं और क्या क्या करने की जरूरत है. इसके लिए हम 30 सेकेंड्स के लिए रुक रहे हैं. आफ्टर 30 सेकेंड्स देयर इज अ, जो मैंने आपसे बताया था कि ईमेल मैजिक जो है हमारे पास, ईमेल ट्रिक जो हम बताने वाले हैं आज आपको. मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ईमेल्स कलेक्ट करते हैं और कैसे उसको लोगों तक पहुंचाते हैं. अनलिमिटेड लोगों तक अनलिमिटेड ईमेल्स हमें कैसे कलेक्ट करनी है. फिर देन विल बी लाइक वाइंडिंग अप दिस सेशन. So we are just stopping now for 30 seconds. I request everybody to click on the link and give the short feedbacks there and write done in the chat box. If you feel that today's session has added some value in your knowledge about marketing and branding, please give a short feedback there. Please be genuine. You don't have to be very much dayavan on me. You can be very much clear. Like if you like my session, you can write. This will really help us to actually improve our services, give you more content. Like this is just if you have attended my session today only, so this will be the first session for you. The people who have attended my webinars earlier, they know that every month we do one marketing session. And I'll also share a number with you, and on that number, if you'll message, you'll get a WhatsApp link, a group link, and you can be added in that particular WhatsApp group. And every day you will get a lot of marketing content and different quotations, different type of like we keep sharing things there. And if you face any problem in marketing and branding, you can message in the group. We open that group for everybody. Sometimes we close that, depending on the scenario. So I'll tell you that you can just you all can be added in the group. So I received one person written done. Other guys, can you please write down your comments and then we can move forward. I hope you all are enjoying my session. If you are enjoying, write enjoying in the chat box. If you learned something, you can write learn. If you're enjoying, you can write enjoying. I send it to Modi. Let me write it for everybody. Thank you, ma'am, as always, evergreen session. Thank you so much, ma'am. Okay, so let's come to the hack now. ध्यान से देखिए, just be with me now. What I am going to do, I'll do this everything on like in front of you. Okay, so for example, I am just stopping my screen now. I'm just sharing my Google with you. Google Chrome. Okay,
So here is my Google search engine. Okay. So what I have to do now, suppose I need a contact from, I need a contact of people from Delhi. Just imagine. I can write Delhi. I'll put comma there. I'll write mail.com. I can put this without Yahoo on the search. Okay. So this is the search. The like email has shown me the searches. ये बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे pages open होंगे, आप देखेंगे. If you keep scrolling down, it will keep coming, right? ये आप देख रहे हैं नीचे, then next. You can keep going with this. Okay. The next search you have to open and you have to write down, like if you'll see. For example, I've searched it earlier, so it is showing email extractor 1.8 Lite. So just click on this. Click the first one. So this tool has come. So now what you have to do, just go on this previous search. Just copy this entire page here. Control C. Go on this tool, click Control V and write extract. Can you see this output window? There are a lot of emails that have come. Can you see this? Can you see this? Yes or no? Yes. Yes. Okay. So this is the tool that you can use, and if you want like to use it, now what you can do, you can just extract with an URL, or there are a lot of like techniques. So now what you can do, you can just copy all these emails and just paste them in the Excel sheet. Okay. So this was a short trick that we use when we, and you keep turning the pages on Google, keep copying, keep pasting, keep extracting. So in a day, you can get more than 500 to, like you sit on this tool for 10 minutes, you can get around 500 emails. Just keep copy, do a copy, paste it, and just copy them and put it in the Excel sheet and make a proper sheet out of it. ये एक सिंपल तरीका है ईमेल का, और मैं आपको ये मैंने पीपीटी में जैसे शो किया है, जो मैंने अभी आपसे जो चीजें मैंने आपको बताई थी, इट्स देयर इन द पीपीटी, आप देखें इसको. सो यू हैव टू राइट डाउन दिल्ली. आप न्यू भी लिख सकते हैं अगर आपको नए. कैन यू प्लीज शो द पेज वंस अगेन वेयर वेबसाइट्स वर रिटन. Do you want me to repeat this, or is it clear? Like if you want me to repeat this, write repeat in the chat box so that I can see how many people didn't get it. One person has written repeat. Manjit Kaur has written. Okay, I'll just repeat it. So because I can't see on camera, so it's very difficult for me also to understand. Okay, so can you let me just stop. Okay, so this is the search that Google homepage. Okay, so you simply have to search like Delhi. If in place of Delhi, if you want people from Mumbai, you can change it to Mumbai. We want it like entire India, you can write in India. A lot of new queries will come. So here we come. So what you can do, you can just copy this entire this thing. You have to copy this. Let me just copy. Go there in this tool, paste it here. And extract. The moment you'll click on extract, all these email IDs will come like this. You get it now?
It's very simple, guys. You just try it once. I can guarantee you, just try it once. It's not very difficult. It's a very simple tool that you can use. And I hope you like this tool. If you like this tool, write like in the chat box if you like this tool. Like, what is your feedback on this tool? लाइक तो ठीक है, कितने लोग उसको यूज करने वाले हैं वो मैटर करता है। मेरे वेब सेशन में लोग सब बहुत इंटरेस्ट शो करते हैं, मजा भी आता है, बट फिर बाद में कोई करता नहीं है, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है। ओके, तो लेट्स डायरेक्टली कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंस्टाग्राम लाइव मैं सोच रहा था कि हम जा सकते हैं, बट हम एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी टीम में ऐसे कोई इंडिविजुअल हैं, जैसे कि हम लोग टॉक शोज करते हैं, हम लोग स्टोरी टाइम्स करते हैं, तो अगर ऐसा कोई है जो काउंसिल इंडिया के पेज पे लाइव आना चाहता है और उनके मतलब दे हैव एटलीस्ट अ गुड प्रोफाइल, क्योंकि नॉट विद 0 फॉलोअर्स आई हैव और 1 or 2 followers. If you have a good build or you think your page is good and you are actually doing marketing and you need to increase more customers on your page, if you want to come live with me on the Instagram page, you can just write a mail or info@counselindia.com that yes, this is your page. You can attach your page link. You can tell that you want to come live, and you can also drop the topic that you want to come live. Our team will contact you and we will plan a proper timely session with you, a live session, and that will be a great thing that we will be going live with our participants. Rather than helping random person, we feel good when we help our own people, right? So anybody who want to come live on Counsel India's official page and you have a good build, you have a good content, you have a good profile, just feel free to contact us on the email. It's info@counselindia.com and our team will contact you. Okay. Next thing is marketing is not doing something differently. Okay. मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि everybody should understand this. Marketing is not doing something differently, rather doing everything differently. This is marketing. अगर आप सोचोगे कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, या तो वो ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा करूँ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा. Every time you have to think something different. Every time you have to plan differently. Okay. Next is मैं आपको बता दूं कि फेसबुक मार्केटिंग में अगर आप जाते हैं या फिर इंस्टाग्राम मार्केटिंग में जाते हैं, ये दो अभी फिलहाल सबसे अच्छे, जहाँ पे सबसे ज्यादा क्राउड मिल रहा है. हालांकि फेसबुक की जगह आप लिंक्डइन यूज करेंगे तो भी आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा, बट लिंक्डइन पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कंटेंट के लिए, लोगों को लेके आने के लिए, लोगों से कनेक्शन बनाने के लिए. लिंक्डइन इज नॉट अ वेरी इजी टास्क. ओके. फेसबुक मार्केटिंग है, क्रिएट बिजनेस पेज, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अपनी पर्सनल प्रोफाइल से मत करिए. हैव अ गुड कवर पेज, कंटेंट एक अच्छा पोस्ट करिए, वहाँ पे अच्छा कंटेंट बनाइए. क्रिएट टू एंगेज, मतलब ऐसा कंटेंट बनाइए कि लोग एंगेज करें. लाइक आप सर्वे करिए, लोगों को एंगेज करिए, वहाँ पे ऐसा कमेंट लिखिए, ऐसे पोस्ट करिए कि लोग वहाँ पे एंगेज करेंगे. अगर आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर रहे हैं तो बिजनेस अकाउंट बनाएं, अपना पर्सनल अकाउंट ना बनाएं. हैशटैग्स यूज करें, वीडियोस बनाएं, पोस्टर्स बनाएं, IGTVs है, फीड्स है, स्टोरीज है, फीड ब्लॉग्स बनाएं. मतलब एक पूरा ऐसा ब्लॉग बना के आप 6 पोस्टर्स, 6 पोस्ट का एक पूरा एक ग्रिड बनता है, तो वैसे फीड ब्लॉग्स बनाएं आप. सिंपल कंटेंट लिखें, बहुत ज़्यादा टेक्निकल लोग समझ नहीं पाते हैं. सिंपल कंटेंट लिखें, इफेक्टिव कंटेंट लिखें. फिर SFS है, सबसे एंड में मैंने लिखा. SFS का मतलब होता है कि आपने किसी के पेज के लिए मार्केटिंग किया और उस पर्सन ने आपके लिए मार्केटिंग किया. दैट इज कॉल्ड एज अ बार्टर सिस्टम. आपने उसकी पोस्ट अपने पेज पे डाल दिया और अपना पोस्ट आपने उसके पेज पे डाल. दिस इज कॉल्ड एज SFS. आप SFS वे में काम कर सकते हैं, मार्केटिंग में कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं. ओके. एंड कमिंग ऑन द नेक्स्ट. Okay, so guys, thank you so much for, I don't know why this image is black. Thank you so much guys for joining me today. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग आए यहाँ पे. और if you have any query, if you want to ask anything, just feel free to ask. And